आज का जो विषय है ना, दिख रहा है स्लाइड? यस सर। यस सर, स्लाइड ओके, दिख रहा है सर स्लाइड। ठीक ठीक। आज today we are going to discuss about the method of manufacture. What are the process actually involved in manufacture of condensed milk? Here condensed milk means matlab sweetened condensed milk, and I will discuss later about evaporated milk, that is unsweetened condensed milk. We have already go through the specification whatever laid down by the different agency, FSSI or Codex Alimentary Commission also, and here we will discuss about the what are the different process actually involved in the manufacture of condensed milk. Here these are the some pictures. Here two major companies, Amul, that is Mithai Made, and Nestle Milk Made, and another one is Eagle brand, that is the first. I have already discussed about this one, Eagle brand है ना, नेस्ले के द्वारा जो है शुरू किया गया था। ईगल ब्रांड स्वीट एंड कंडेंस सबसे पहले इसने ही बनाया था। गेल बोर्डन, जो हमने बताया था, गेल बोर्डन साहब ने इसकी शुरुआत की थी। गेल बोर्डन का फिगर भी देख सकते हो, ये गेल बोर्डन साहब थे जो यूएसए न्यूयॉर्क में सबसे पहले जो है इन्होंने कंडेंस मिल्क की शुरुआत की। और these are the different purposes where we can say different type of material which are actually used for the manufacture of condensed milk. जैसे what are the raw materials? That is first of all milk. Another one is that how we can go for condensing. So there is a condensing, either we can condense either in vacuum pan or two effect evaporator, multiple effect evaporator, है ना। Here different even you can use 7 effect evaporator. So nowadays in some of the dairy plant having more than 7 multiple effect evaporator where we can actually condense the milk. Another one is that that is powdered lactose crystal that is used for manufacture of condensed milk. We will discuss later what are the that is called seeding. Seeding means addition of powder lactose crystal to provide nuclei to the finished product, that is sweetened condensed milk. Otherwise kya hoga, there may be defect, two type of sandiness defect may be comes into the condensed milk. So we will discuss all other things later on. Now comes into the what are the different process actually involved in the manufacture of condensed milk. Number one, we use, first of all we receive condensed. So first of all we are receiving cow milk or buffalo milk. We all know that even in market milk class also you already know that cow milk have better heat stability in comparison to buffalo milk. So if as such buffalo milk is used for the manufacture of condensed milk or evaporated milk, we are not able to prepare because due to the poor heat stability, the milk not actually face the higher heat treatment. So there is very little chance of manufacture of condensed milk from buffalo milk without any modification. When we done the modification, either we use additives for improving the heat stability of the milk or any other modification. Until unless we go for modification, we cannot able to prepare condensed milk from the buffalo milk. So first of all, cow milk is preferable for the manufacture of condensed milk. So what should be the quality? Here we have to discuss what should be the quality for the manufacture of condensed milk. In like other products also, here first of all milk should be fresh, clean, free from any off flavor, and slight sweet, that is milk generally slight sweets. Any fresh milk, natural milk, slight sweety in nature. So milk must be free from any type of off flavor. And then another one is milk should be free from any type of adulterants, any type of preservatives.
milk should be free from any type of antibiotic residue, pesticide residues, any type of residual sanitizers, any type of detergents residues. So milk should be free from this type of contaminants. And you can also say that milk should be the most of the here in India, not only in India but whole world. The major drawback of dairy animal is that most of the animals are high milk animals are suffer from mastitis. So the milk should not be collect from the mastitis affected animals. है ना? तो milk का that milk colostrum already you know which is colostrum. So the milk should means free from any type of cholesterol, colostrum or any type of mastitis milk or abnormal milk. Abnormal milk means if milk is collected from unhealthy animals, so their chances may be of definitely chances of the different type of defects. So that milk should not be used for the preparation of condensed milk. Similarly, I have already told you that salt balance should be better in case of cow milk in comparison to buffalo milk. Because due to the slight salt imbalance, milk may become curdled at higher temperature. So there must be a balance. What is salt balance? There is a balance between phosphate and citrates, calcium and phosphorus, and phosphate and citrates. There is a balance required. As per Sommer's theory, already in market milk also you have studied that it should be 0.37 for the cow milk, है ना? तो इस तरह से हम लोग और on the basis of क्या कहता है laboratory or by the some test has been recommended for accepting or rejecting the milk for the preparation of what? For preparation of condensed milk. So what should be the criteria for the manufacture of condensed milk? So before accepting or rejecting the milk, the 3 tests has been recommended. On the basis of these tests, you can either reject or accept the milk. I have already give you the idea also in market milk. One is alcohol test. Alcohol test, this is the simple test in which we can take simply in a test tube we take 5 ml of milk and 5 ml of alcohol and mix it. If there is a flake formation or milk curdle, that means milk is not suitable for condensing. That is positive. Agar negative आया तो milk is suitable for preparation of condensed milk. That means milk should be selected for onward treatment of manufacture of condensed milk. Similarly, clot on boiling test, which is already done at different platform of dairy industry. So clot on boiling test, you have already learned about COB test, clot on boiling test. So this test is also recommended for accepting the milk for the in clot on boiling test. If the milk should be not high developed acidity. If there is a development in acidity, the milk become curdled. Particularly when we give milk is subjected to the higher heat treatment. So here we are how milk become coagulate. If the acidity of the milk is more than 0.2% of lactic acid, and it will be if milk is subjected to heat, then it becomes curdled. So these are the different tests. Another one is alcohol index test. We have already discussed about this one also. Alcohol index test क्या है? The number of it is determined by placing absolute alcohol in a burette and 10 ml of milk in a beaker. अब क्या होगा? जितना number of milliliter milk ये क्या कहता है alcohol coagulate करने में लगेगा, जितना number लगेगा, that means indicates the number alcohol index. So if alcohol index is 7, that means our milk is suitable for what? Suitable for preparation of condensed milk. Yes, good. तो इस तरह से जब हमारा heat stability जो है 3 आएगा, तो that means milk rejected.
अगर 6 आया, then milk also again rejected. When alcohol index is 7, then milk is accepted for preparation of condensed milk. These are the laboratory point of view, because you are not going to see how milk is collected. Then on the basis of these tests, we are actually advocating or recommending the dairy personnel to, it can be, this milk can be used for condensed milk or evaporated milk. So these are the different tests by which we are actually selecting the milk for the preparation of condensed milk. Now comes into the next step, that is here you can see clarification or filtration. So in dairy industry, the dry process machine is available, and where we can actually, we are go for sterilization and also clarification at the same time. So what is the purpose of clarification? Already you know, clarification क्यों जरूरी है? To remove the foreign material from the milk, or any particles which may adhere with the fat globules, should be separated from the milk, and this can be done by either by clarifier or by filter. So generally the milk is heated to 40 degrees centigrade, slight heated to the 40 degrees centigrade, 40, 42, 43, 40 degrees centigrade, so that all the particles at, like feed or other for debris, कुछ भी है अगर वो क्या है, जो adhere है, particle fat के साथ adhere है, उसको liberate करने के लिए हम थोड़ा सा warm करते हैं. इसलिए recommended है कि घर पे भी अगर तुम जो दूध लेते हो, अगर हल्का गर्म करके अगर तुम छानोगे तो देखोगे, you will find that there is more foreign material are excluded from your milk. So milk become more healthier, more better. So the main purpose of preheating, or it can all generally done at 35 to 40 degrees centigrade. The purpose is to improve the efficiency of operation. अगर मान लो foreign material लगा रहेगा तो हमारा जो plant का efficiency है, that will also be reduced. Another one is that sterilization. Here we can see that that is just sterilization. After that we can go for sterilization, where I have already in several times I have told you that what is sterilization? Sterilization means adjustment of fat and SNF. Here we go for two stages of homogenization. Two stages of homogenization means, because in condensed milk we are using sugar. So first of all, we are standardize the fat or SN ratio into 1:2.44. That means we are adjusting the fat and SNF in the ratio of 1:2.44. So this is the called first stage standardization. Then we can go for second stage standardization. Here यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो हम शुगर ऐड करते हैं, उसका टोटल सॉलिड जो है, उसका जो शुगर रेशियो है उसको एडजस्ट करते हैं. सेकंड स्टेज में क्या करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन में, वी स्टैंडर्डाइज शुगर विथ रेस्पेक्ट टू टोटल मिल्क सॉलिड. हम पढ़े हैं ना कि जो कंडेंस मिल्क होगा उसमें कितना सॉलिड होना चाहिए, 31% से ज्यादा, कम से कम 31% सॉलिड होना चाहिए, पढ़े हो ना. तो इसके लिए हम लोग क्या है कि शुगर और टोटल मिल्क सॉलिड के रेशियो को, डिजायर्ड लेवल हमारा कितना है 31, तो वहां तक हम एडजस्ट करेंगे. और नंबर 3 थर्ड स्टेज में हमको क्या करना है कि जितना हमारा कंडेंस मिल्क में कंसंट्रेशन है और उसका जो डिजायर्ड जो टोटल सॉलिड है उसको, तो हम इस तरह से कंडेंस मिल्क में 3 स्टेज स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं. नंबर 1 फैट एंड एसएनएफ रेशियो, दैट इज एडजस्टेड 1:2.44%. Another one is sugar level and total milk solid. Total milk solid का है, so जो desired level का हमको milk solid, total milk solid चाहिए, उसका adjustment करते हैं. नंबर 3 में हम क्या करते हैं, concentration of condensed milk to the desired level of total solid. Total solid जो already defined है, we have already studied in the definition and legal standard of the condensed milk. So in the preparation of condensed milk, we are calculating the different I will give you numericals, or here on the numerical you can have to find out what should be the amount of sugar, what should be the
what should be the cream removed or cream added or skim milk added. There I will give numerical so that you can acquaint with the explanation of the condensed milk. This is the very much essential. Being a dairy technologist, here main duty of you to first of all you standardize the milk for the condensed milk. So here you have to adjustment of fat, SNF, feed, sugar and milk solid, then condensed milk to the total solid. 3 स्टेज पे स्टैंडर्डाइजेशन करना है, इसलिए इसमें रेशियो कंसंट्रेशन वगैरह सब निकालना है. तो आई विल गिव यू न्यूमेरिकल्स इन द लेटर क्लास. नेक्स्ट इज फोर वार्मिंग, दैट इज कॉल्ड आल्सो कॉल्ड प्रीहीटिंग, है ना. तो व्हाट शुड बी द फोर वार्मिंग. फोर वार्मिंग जैसे ऑलरेडी तुम जानते हो, इसमें सबसे पहला हमारा क्या होता है कि फ्री फ्रॉम, इंश्योर द कंज्यूमर दैट मिल्क इज द आवर कंडेंस्ड मिल्क इज free from any type of pathogens or any type of enzymes either liberated from microbial sources or from or present in the milk as milk itself. So the main purpose of forewarming or preheating is, or it is generally done before condensing, है ना. तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं. और दूसरा जो सबसे बड़ा पर्पस है फोरवार्मिंग का, कि जब हम इसको वैक्यूम पैन में, मैंने बताया कि जो कंडेंसिंग करते हैं उसको या तो वैक्यूम पैन में करते हैं या टू स्टेज मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर में भी कर सकते हैं और 7 इफेक्ट इवेपोरेटर में भी कर सकते हैं. जैसे जैसे हम सीरीज बढ़ाते हैं और हमारा हीट ऑफ इकोनॉमी जो है उसके अनुसार इकोनॉमी जो है कम लागत होते जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ हमारा प्लांट का कॉम्प्लिकेशन भी बढ़ता है. तो उसको हम अलग से बताएंगे आपको. तो हमारा क्या है, टू इंश्योर uninterrupted boiling in the vacuum. Forewarming का another purpose क्या है, to ensure uninterrupted boiling in the vacuum pan और या multiple evaporator जो भी करना है. और सबसे बड़ा बात क्या है कि दो तरह का जो हमारा फिनिश्ड कंडेंस्ड मिल्क में एक बहुत बड़ा जो क्या कहता है डिफेक्ट होता है, वो होता है एज थिकनिंग, है ना. एज थिकनिंग 2 टाइप्स का होता है, एक माइक्रोबियल सोर्सेस का बैक्टीरियल थिकनिंग उसको कहते हैं और एक फिजिकल होता है ना. तो एज थिकनिंग का जो है उसको कंट्रोल करने के लिए टू अवॉइड द मिल्क फ्रॉम एज थिकनिंग डिफेक्ट, देन जनरली वी कैन गो फॉर फोरवार्मिंग. अब तुम पूछ सकते हो कि व्हाट शुड बी द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन. जनरली तुम अगर इन जनरल एक लाइन में अगर कहते हैं तो हम लोग जिस तरह से मिल्क में जैसे बताते हैं कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 सेकेंड और 63 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट्स और एनी टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन व्हिच गिव्स द सिमिलर इफेक्ट. जो पास्चुरेशन का इफेक्ट है वो अगर हमको कोई भी टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन से मिलता है तो हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं. उसी तरह से फोरवार्मिंग में भी हमारा पर्पस जो ये सॉल्व करेगा वो टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन कोई भी हम ऐसे ले सकते हैं. तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो डेयरी इंडस्ट्री में यूज होता है 115 115 टू 118 विदाउट होल्ड, 115 टू 118 विदाउट होल्ड. उसके बाद हम कर सकते हैं 82 से 93 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 5 टू 15 मिनट्स और 116 से 149 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 0.5 टू 5 मिनट्स और एनी टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन which gives the similar effect. That means what is the purpose of forewarming, that the temperature combination definitely ensure the benefit of forewarming. So these are the beauty of forewarming. इसके अलावा जो हम forewarming करते हैं तो तुमको पता है कि इंजीनियरिंग में पढ़ाया भी गया होगा कि क्या कहता है कैसे करके हम लोग जो है forewarming के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं. अभी हम स्टेप बाय स्टेप की थोड़ा सा प्रोसेस समझ लो, उसके बाद फिर हम लोग इसका अलग से ये करेंगे. उसके अलावा तुमको हम बता दें कि हीट इंड्यूस चेंजेस, फोरवार्मिंग में जो हीट इंड्यूस चेंजेस जो तुम होता है जिसको हम लोग एक मेलियार्ड रिएक्शन होता है. क्या होता है? मेलियार्ड रिएक्शन. तो मेलियार्ड रिएक्शन में क्या होता है, बिकॉज हियर शुगर का प्रोटीन के साथ हियर एमिनो एसिड के साथ रिएक्शन होता है, तो उसको हम मेलियार्ड रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं मेलियार्ड रिएक्शन में? मेलियार्ड रिएक्शन में क्या होता है बताओ? शुगर का अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन होता है सर. शुगर का अमीनो एसिड के साथ, शुगर और प्रोटीन, यहाँ पे प्रोटीन कौन सा है? अमीनो एसिड से बना होता है प्रोटीन. तो अमीनो एसिड
और शुगर के बीच में जो नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होता है मेलियार्ड में, उसको कहते हैं हम मेलियार्ड रिएक्शन। एक और होता है कैरामल फ्लेवर, कैरामलाइज रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है कि एक तरह का ऑफ फ्लेवर है, कैरामल फ्लेवर, वो ऑफ फ्लेवर है जो जनरली क्या होता है, जो शुगर होता है ना, उसको अगर हम हाई टेम्परेचर पे करते हैं और हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं या स्टोर करते हैं, तो उसमें इस तरह का कैरामल फ्लेवर डेवलप होता है। उसमें क्या होता है, शुगर केवल डिकम्पोज होता है, उसमें अमीनो एसिड नहीं आता है, उसमें अमीनो एसिड का रिएक्शन उसके साथ नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में जानना है। तो जो हम लोग का है कि जो दो तरह का होता है इफेक्ट हीट, मैंने इसमें याद रखना, एक होता है ब्राउनिंग रिएक्शन जो कि मेलियार्ड रिएक्शन होता है। उसमें क्या होता है कि शुगर का, यहाँ पे शुगर क्या है, लैक्टोज भी है और साथ में जो शुगर ऐड किए उसका बीच और अमीनो एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग मेलियार्ड रिएक्शन कहेंगे। एक होगा कैरामलाइजेशन, दोनों का डिफरेंस भी पूछा जाता है। ये क्या है, नॉन एमिनो ब्राउनिंग इसको भी कहते हैं, नॉन एमिनो ब्राउनिंग। इसका मतलब क्या है, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एमिनो एसिड, ओनली कैरामलाइजेशन क्या होता है, हीट डिकम्पोजिशन ऑफ शुगर। खाली शुगर का जो डिकम्पोज होता है वो केवल हीट के चलते होता है, इन द एब्सेंस ऑफ एमिनो एसिड। मेलियार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एमिनो एसिड। और इसमें क्या होता है, मैं थोड़ा देर में फोन करता हूं, ठीक है। तो मेलियार्ड रिएक्शन और कैरामलाइजेशन में अंतर समझ गए। ये जो होता है हीट इंड्यूस चेंजेस होता है बहुत सारा। हीट इंड्यूस चेंजेस में ऑलरेडी बताया कि जितना वेजिटेटिव सेल्स है, स्पोर्स है, ये सब हम लोग उसमें डिस्ट्रॉय करते हैं। और इसके अलावा क्या होता है कि ज्यादा हीट करते हैं तो लैक्टोन्स और मिथाइल कीटोन बनता है, लैक्टोन्स और मिथाइल कीटोन बनता है। हाइयर टेम्परेचर उससे भी ज्यादा जाओ तो लैक्टोलोज बनता है, लैक्टोलोज। बहुत ज्यादा सीवियर हीट करोगे तो लैक्टोलोज बनता है। तो लेकिन ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो हमें पहले इसका ओवरव्यू जान जाओ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन। अनदर वन, प्रीहीटिंग का जो सबसे बड़ा ब्यूटी क्या है, एक और क्या है कि ये क्या करता है, टू इनएक्टिवेट द एंजाइम्स, टू इनएक्टिवेट जो प्रोटीजेज लाइपेज एंजाइम्स, आइदर बैक्टीरियल सोर्सेस है या इसमें है या फिर किसी सोर्सेस से उसमें आया है मिल्क में, तो उसको इनएक्टिव करता है। और एक चीज और सुने होंगे, है ना, कि जो हम लोग प्री फोर वार्मिंग देते हैं उसमें क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। क्या होता है, जो हम फोर वार्मिंग देते हैं उससे क्या होता है, जो सल्फाहाइड्रिल कंपाउंड बना और डेवलपमेंट एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी डेवलप होता है, ठीक है। तो एंटीऑक्सीडेंट जो डेवलप होता है ना, तो वो क्या करता है, दैट आल्सो प्रिजर्व। और अब तुम जो जाते हो और अगर देखते हो कि दूध को बहुत जब गर्म करते हो तो जो उससे चाय बनता है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको प्रेफर, ज्यादातर जो है इंडियंस या बिहार के लोग क्या करते हैं, उसको प्रेफर करते हैं। उसका कारण क्या है कि उसमें जो सल्फाहाइड्रिल कंपाउंड बना तो वो थोड़ा सा स्लाइट बर्न फ्लेवर देता है। इवन देखोगे कि सब जो डिफरेंट तरह का पेड़ा भी, तुम अगर बिहार में डिफरेंट लोकेशन पे अगर इसमें किसी का अगर घर आ रहा है रूट में हो, तो तेलंगाना पेड़ा चुने होंगे, तेलंगाना है ना, तिलंगा जी का पेड़ा। तो वहां पे देखोगे क्या है, क्या करता है वो दूध को बहुत ज्यादा बॉयल करके करता है और उसके बाद उसमें जो आता है एक कैरामलाइज थोड़ा सा फ्लेवर आता है, साथ में वो क्या करता है, थोड़ा सा फर्मिगेशन भी करता है उसका, तो उसका पेड़ा का टेस्ट। और जो केसरिया पेड़ा है, चाहे वो क्या कहता है नालंदा का पेड़ा हो या फिर तुम्हारा बौंसी का पेड़ा हो, बौंसी बांका के तरफ का पेड़ा हो या बाबा धाम का पेड़ा हो, सब में पिकुलियर अंतर है। तो these are due to one of the factor is heat treatment. How heat treatment is given or what is the severity of heat treatment. तो here हम लोग क्या करते हैं, जब हम कोर वार्मिंग करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ है ना, डेवलपमेंट ऑफ एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। Another one is that what is another one? Then next, homogenization. है ना, here is homogenization is optional, but you can opt this one also. But either you opt or not, then homogenization, in some cases homogenization may be omitted. But here next, after preheat treatment, you are use addition of sugar, है ना, addition of sugar.
तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ शुगर? तुम ऑलरेडी जानते हो कि टू प्रोवाइड प्रिजर्वेशन इफेक्ट टू द स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क विदाउट सब्जेक्ट टू स्टेरिलाइजेशन। मतलब इसमें हम किसी तरह का स्टेरिलाइजेशन टेम्परेचर नहीं देते हैं, कि मीन शुगर इज एक्चुअली एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव। तो व्हाट शुड बी द डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर वी आर यूजिंग? पहला तो पता है तुमको कि सुक्रोज, जनरली सुक्रोज इज प्रेफर्ड, सुक्रोज इज एडेड, बट नाउ ए डे you can also use other sweetening agent like corn syrup, solid glucose, dextrose. You can replace sugar almost by 5 to 25%. Complete replacement of sugar is not possible. अगर complete करोगे, you cannot get the preservation effect of the sweetened condensed. Or what should be so amount of sugar? So the amount of sugar generally advocating 40 to 45% in the finished product. That means it requires around 18 से 20% sugar on the milk basis. और इसका फॉर्मूला भी है, how you can determine the sugar ratio? The sugar ratio can be determined by percentage sugar बटा 100 minus percentage total milk solid गुने 100. It will give you more clear when we give you numericals, and I will give you all the formula which is actually required for solving these numericals. So I will give you later class. So here we are using, हमने क्या कहा कि शुगर के रूप में हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूज सुक्रोज, और सुक्रोज की जगह पे अदर स्वीटिंग एजेंट इज अलाउड, बट व्हाट आर दोस शुगर्स? वो हो सकता है कॉर्न सिरप, वो हो सकता है ग्लूकोज हो सकता है, वो डेक्सट्रोज हो सकता है, लेकिन नॉट मोर देन 25%। बाकी पूरा हमको सुक्रोज को ही यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा जो है एक तो प्रिजर्वेटिव इफेक्ट नहीं आएगा, और जो जितना डिफेक्ट एज थिकनिंग वगैरह बताया मैंने, वो सब डिफेक्ट स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क में आ जाएगा। और शुगर हम लोग जनरली क्या करते हैं, इंड में कंडेंसिंग जब हो जाता है तो उसके लास्ट में हम लोग उसको जोड़ते हैं। और सबसे बड़ा बात क्या है कि प्रिजर्वेटिव का काम कैसे करता है, तुमको ऑलरेडी पता है कैसे करता है। वो ऑस्मेटिक प्रेशर जो सफिशिएंट हो माइक्रोबियल स्पाइलेज के लिए, है ना, शुगर डालते हैं तो क्या होता है, बैक्टीरिया कितने तरह से मरता है, तो उसमें जो एक है ऑस्मेटिक प्रेशर दैट इज सफिशिएंट फॉर प्रिवेंट द माइक्रोबियल स्पाइलेज, है ना। इस तरह से हम लोग ऐसो शुगर को यूज करके किसी तरह का स्पाइलेज से दूध को, कंडेंस्ड मिल्क को बचाते हैं, बिकॉज हियर वी आर नॉट प्रोवाइडिंग हीट क्रिस्टलाइजेशन। हीट क्रिस्टलाइजेशन किस में देंगे हम? इवोपरेटेड मिल्क में। और जनरली जो है एक चीज और हम कहना चाहेंगे कि शुगर जो हम देते हैं, तो शुगर का क्वालिटी कैसा होना चाहिए? तो शुगर शुड बी फ्री फ्रॉम एनी टाइप ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, और एनी टाइप ऑफ शुगर किस तरह का और होना चाहिए? तो शुगर मस्ट हैव प्रिजर्वेटिव इफेक्ट, शुगर मस्ट हैव पावर ऑफ इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ जर्म्स लाइफ, जो जर्म्स का लाइफ है उसको भी इफेक्ट करे। और उसके अलावा क्या है, मस्ट हैव पावर टू इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ जर्म्स। तो जिस तरह से हमारा जो शुगर का क्वालिटी होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। और अगर हम अब जैसे मैंने बताया दूसरा शुगर यूज करते हैं, जैसे मान लो डेक्सट्रोज यूज किया, और हम लोग मान लो डेक्सट्रोज यूज होता है, कॉर्न सिरप यूज किए, तो उससे क्या होगा, उसका क्या बैड इफेक्ट है? सबसे बड़ा बैड इफेक्ट तो ये है कि उसमें एज थिकनिंग डिफेक्ट आएगा। क्या आएगा? एज थिकनिंग डिफेक्ट आएगा। दूसरा क्या होगा? डिसकलरेशन होगा, अगर हम दूध को स्वीटेंड कंडेंस्ड मिल्क को लंबे समय के लिए रखेंगे। एक्चुअली क्या है कि नाउ वी हैव ओनली 3 मिनट्स लेफ्ट, है ना। तो here we are actually up to I am discuss up to the addition of sugar. What is the purpose of sugar? What different type of sugar we have to take, and what should be the limitation of other sugar, and what should be the adverse effect if we are using other than sucrose. So these are the aspects we have covered today, and I will cover next remaining that means condensing. Here in condensing, because condensing means this is the core step which convert here we can able to convert the milk into the condensing by using by employing vacuum fan or employing multiple effect evaporator. So this I will discuss in the next class. और
If you have any query, you can ask. Have you any query? And you can see the first plant है ना, न्यूयॉर्क में जो पहला प्लांट लगा था बोर्डन का कंडेंस मिल्क का, ये देखो, ये दिस इज द प्लांट है ना, जो कि है सो न्यूयॉर्क में बोर्डन का जो लगाया गया था, ये तुम देख सकते हो। अमरजीत, यस सर। हाँ, और अलग और देखो डिफरेंट टाइप का जो मटेरियल ये जो अवेलेबल है मार्केट में, डिफरेंट पैकेजिंग फॉर्म्स में, यू कैन सी हियर है ना, ये टेट्रा पैक में भी है और ये कैन पैकिंग में भी है ना, ये फिर जो ये टेस्ट ट्यूब में भी, ये क्या कहता है, ये पेस्ट के फॉर्म में भी अवेलेबल है ना, डिफरेंट फॉर्म्स में है। और हियर वी कैन यूज कंडेंस मिल्क का प्लांट कैसे यूज होता है, आई विल डिस्कस, वी विल डिस्कस आल्सो व्हाट आर द ट्रेडिशनल प्रोसेस, आई विल डिस्कस इन बोथ द, but the scientific principle behind the manufacture of sweetened condensed milk is almost same, है ना। So if you have any query, you can ask. Prasanjit, in spite of several requests, only few students are actually open their video. I think what is the reason, I can't say. In spite of several reminders, several requests, you at least open your video during the class. I'm not interrupting you in between. Simply when we see your face, I have also confidence that you are listen my lecture seriously. At least you must follow the instruction. I cannot do anything from this place. So we are actually discussing up to the sugar, and in next class we will cover other aspect which are actually required for the preparation of condensed milk, है ना। In next step we will start with the condensing, है ना। So we will discuss in the next class. और किसी तरह का query है तो you can tell me. और कोई है? सर हाँ बोलो। सर क्रीम का जो पास्चुराइजेशन करते हैं तो उसमें ST करते हैं, बेच पास्चुराइजेशन करते हैं, तो सबका लाइफ एक्सपेंस सेम ही होगा सर? देखो, जब हम ST करते हैं, यहाँ पे कितना करते हैं क्रीम में,